Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your science teacher, Miss Farheen, and I welcome you all to your science class. My dear students, today we are going to start a new chapter from the book. That is chapter number 7, and the name of this chapter is The Earth and Its Resources. यानी कि अर्थ और उसमें पाए जाने वाले जो मुख्तलिफ रिसोर्सेज हैं, जो मुख्तलिफ स्टोर्स हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं, आज हम उस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं. मुख्तलिफ रिसोर्सेज के बारे में हम वन बाय वन इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. एंड टुडे आई एम गोइंग टू गिव यू एन इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर. So my dear students, these are the student learning outcomes which we will cover in this chapter. So एक brief introduction देख लेते हैं सबसे पहले इस chapter का. इस chapter में हम क्या कुछ सीखने वाले हैं. So my dear students, the earth is the motherland of humans. It has hidden treasures of minerals, metals, gemstones, fossil fuels, plants, etc. Moreover, many animals and plants have been extinct up till now. The earth has preserved information about them. The following chapter covers all the aspects and the investigation of human activities that disturb the natural resources. So my dear students, आपको पता है कि जो अर्थ है ये हमारा घर है, ये हमारे घर की तरह है और यहाँ पर जितने भी चीज़ें हैं हम उनको इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं. इसके अलावा जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है बहुत से जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं दे हैव डाइड. तो उनके जो इम्प्रिंट्स हैं वो किस तरीके से रिजर्व हुए और किस तरीके से हमें उनके बारे में पता चला, तो फॉसिल्स के बारे में भी हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. सो दिस चैप्टर इज गोइंग टू बी अ रियली फन चैप्टर. So my dear students, when we will start lecture number 1, the students will be able to recognize that the earth surface made up of land and water and is surrounded by air. So my dear students, हम earth की surface के बारे में पहले lecture में पढ़ेंगे कि किस तरीके से ये किन चीज़ों पर मुश्तमिल है, किन चीज़ों से मिलकर बनी हुई है. And then we will move forward towards the lecture number 2, and in lecture number 2 the students will be able to recognize that water in rivers and streams flow from mountains to oceans or lakes. सो माय डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा किस तरीके से तमाम जो पानी अर्थ पे है वो इंटरकनेक्टेड है, हम लेक्चर नंबर 2 में इसको डिस्कस करेंगे. देन वी विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स लेक्चर नंबर 3 एंड द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू आइडेंटिफाई some of the earth's natural resources that are used in everyday life. For example, water, wind, soil, forests, oil, natural gas and minerals. So my dear students, one by one जितने भी अर्थ के ऊपर रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, हम उनको लेक्चर नंबर 3 में डिस्कस करेंगे. Then we will move forward towards lecture number 4 and the students will be able to identify some of the natural resources. तो हम इसमें minerals जो है उसको as a natural resource जो है डिस्कस करेंगे. Then we will move forward towards lecture number 5 और lecture number 5 में हम क्या डिस्कस करेंगे. The students will be able to identify some of the natural resources. Again जो है बच्चे natural resources को डिस्कस करेंगे जैसे कि air को और water को. Then we will move forward towards lecture number 6 and again students will recognize that some remains fossils of animals and plants that lived on the earth a long time ago are found in rocks, soil and under the sea. So my dear students, किस तरीके से जितने भी पहले ज़माने में या पास्ट में जो एनिमल्स और प्लांट्स विच हैव डाइड, हमें कैसे उनके बारे में पता चलता है, हम उनको फॉसिल से जानते हैं. तो हम फॉसिल्स को इन डिटेल लेक्चर नंबर 6 में डिस्कस करेंगे. एंड इन लेक्चर नंबर 7 द स्टूडेंट्स 7A जो है उसमें स्टूडेंट्स जो है डिफरेंशिएट कर चुकेंगे बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. देन इन लेक्चर नंबर 7B द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू इन्वेस्टिगेट the impact of human activities on the earth's natural resources. So my dear students, किस तरीके से human activities का bad impact है या क्या impact है natural resources पे, हम इसको lecture number 7B में discuss करेंगे. Then we will move forward towards lecture number 8 that will be the review of the chapter और इसमें हम तमाम student learning outcomes को, reading pages को revise करेंगे and by the end I will give you an assessment sheet जिससे जो है आप को evaluate किया जाएगा कि आपने इस चैप्टर से क्या कुछ सीखा. So my dear students, आपको इस चैप्टर में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. So stay tuned for the next lecture. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.